Hello students. Next topic is mole concept and what is one mole? What is one mole in terms of number of particles, in terms of its mass, in terms of volume. One mole is different for different criterion. One mole represents 6.022 into 10 raised to power 23 particles. In terms of particles, in terms of number of particles, 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles, and this number is called Avogadro number, Na, Avogadro number. So whatever substance is, it may be electrons, it may be molecules, it may be atoms of particular element, but if somebody asks for 1 mole of any substance, then we have to give this much number, 6.022 into 10 raised to power 23 particles of that particular substance. And the next is the mole concept in terms of atomic mass. If somebody asks, give me 1 mole of H2O in terms of not in terms of number but in terms of mass, its weight, then how much H2O we will give? So for that we have to calculate its molecular mass, and molecular mass of H2O is 18 U. And instead of U, unified mass, its units U, instead of U you write it in grams. When you write 18 U into 18 grams, then that is called gram molecular mass. So first convert its molecular mass into gram molecular mass, that is 18 gram. So 1 mole of H2O is equal to what? 18 gram of H2O. So in terms of mass, in terms of weight, if you want to calculate mole, then you have to find out its molecular mass. So 1 mole of H2 is equal to, first calculate its molecular mass, that is 18 U, and then convert it into grams, and that 18 gram is called its 1 mole of H2O. So 1 mole of H2O is 18 gram. Similarly for CO2, 1 mole is equal to what for CO2? So CO2, carbon having atomic mass 12, oxygen having atomic mass 16, and if we calculate its molecular mass, then it will be 44. Molecular mass of CO2 will be 44, and we convert it into grams, then 44 gram is equal to 1 mole of CO2. So that is 1 mole in terms of atomic mass. And now let's find 1 mole is equal to what in terms of volume of a gas. Volume of a gas, in case of volume of a gas, 1 mole is equal to what? 1 mole is equal for any gas, whether it is CO2, N2, oxygen or any other gas. 1 mole is equal to always 22.4 liter of that gas, provided the normal conditions of temperature and pressure, or you can say standard conditions of temperature and pressure. Standard means their pressure, volume, temperature, they should be similar. Standard conditions means the temperature and pressure should be a standard temperature, or it should be a standard pressure. Then for any gas, 1 mole is equal to what? 22.4 liter of that particular gas. And this is the different definitions of moles. And after that there are two important formulas, number of moles is equal to weight in gram divided by molar mass. So this is very important formula
कि if you want to find out number of moles of any substance, then that is equal to W divided by M. W is weight in gram and M is the molar mass. Molar mass means first find out molecular mass and then it's converted into grams. So let's solve one numerical problem. Calculate number of moles in 36 gram of water. So here in this numerical 36 gram, मतलब weight in gram W is given, and if it is water means H2O and its molar mass we know 18 gram, and we have to find out its number of moles. So we have formula, number of moles is equal to weight in gram divided by molar mass, and weight in gram is given 36. So weight in gram is 36 and molar mass of H2O is 18 and number of moles is equal to 2. So number of moles can be calculated by this formula. And the next formula we have number of moles in terms of number of particles, means number of moles is equal to N divided by Na. Na, as we know, it is Na means Avogadro number, and capital N is number of particles of any substance. So if you know the number of particles of any substance and you know the Avogadro number, then you can find number of moles, and vice versa. If you know number of moles and Avogadro number, and you can find number of particles. So for this there is a numerical problem. Calculate the mass of one atom of carbon from calculate the mass of one atom of carbon. So मास हमने निकालना है, मास का मतलब है वेट इन ग्राम हमने निकालना है, और हमें दिया क्या है, कार्बन दिया है। कार्बन का मोलर मास हमें पता है, कार्बन का हमें मोलर मास पता है, और वेट इन ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम मोलर मास को उधर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास है जो कार्बन का वो 14 है, और जो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, और एक फॉर्मूला हमारे पास N डिवाइड बाय Na। सो N कितने पार्टिकल का निकालना है, मोलर मास कितने पार्टिकल का मास निकालना है, एक का, तो ये N1 आ गया, Na हमें गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर देंगे, मोलर मास हमें पता है तो वेट इन ग्राम यहाँ हमारे पास निकल आएगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी जो Again understand this problem. Calculate the mass of one atom of carbon, and we have formula N is equal to W upon M, and here you can find W is equal to what, M इधर चला जाएगा, N into M। So N हमें यहाँ चाहिए, वेट हमने ये इसको मास बोलते हैं, मास हमने एक एटम का निकालना, ये हमने निकालना, ये हमें M तो पता है मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12 ग्राम, N हमने निकालना, तो N के लिए सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, कैपिटल N डिवाइड बाय Na। कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, और ये Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस न्यूमेरिकल में कितने दिए है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम दे रखा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं कार्बन के 1, सो 1 डिवाइडेड बाय Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, ये पुट करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन है जो वो आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, molecular formula and empirical formula. Difference between molecular formula and empirical formula. What is molecular formula? It gives us actual number of atom of various element present in a molecule of a compound. For example, if we have glucose, then the formula of the glucose is C6H6. So this is called molecular formula. In this formula, all the atoms of different elements are given, actual atoms of different elements are given, like कार्बन है जो ग्लूकोज में 6 होते हैं तो 6 लिखे हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं तो 6 होते हैं। लेकिन व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मीन्स द simple whole number ratio of the different empirical formula is it gives the simple whole number ratio of different elements, जो अगर आप देखो कि C6 है और H6 है,
लेकिन इनकी सिंपल होल नंबर रेशो हमने निकालनी है, तो इसको डिवाइड 6 से कर दिया, इससे भी 6 कर दिया, ये कैंसिल हो गई, ये CV1He1 जो इनकी रेशियो है वो क्या है 1:1। अगर ये 1 है कार्बन तो वो भी 1 होगा, अगर 6 है तो वो भी 6 होगा, इनके रेशियो क्या होगी C1H1। सो दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला। एंड मोलिकुलर फार्मूले में एक्चुअल नंबर है कितने ग्लूकोज में, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, एक्चुअल नंबर कितने हैं, ये मोलिकुलर फार्मूले में दिया होता है। और एम्पिरिकल फार्मूले में इसकी रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो है वो गिवन होती है। सो ये कैलकुलेट करना कैसे है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैलकुलेट कैसे करें एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, इसके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, we have to solve the numerical problem here। in the numerical क्या गिवन है, कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है, कोई मॉलिक्यूलर हमारे पास कंपाउंड है, उसके हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है, और हमने उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 166 ग्राम पर मोल। तो हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, बड़ा सिंपल है। जो परसेंटेज लिखी है, सबसे पहले लिख लो, कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसकी परसेंटेज इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, और परसेंटेज को हम मान लेंगे वेट इन ग्राम, W वेट इन ग्राम, इनको मान लेंगे परसेंटेज को। और हमारे पास एटॉमिक मास कार्बन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और जो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ हमारे पास एटॉमिक मास, जिसको मोलर मास भी बोलते हैं, वो भी दिया है, वेट इन ग्राम भी दिया है। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पहले हमने लगाना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ये फार्मूला लगाना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेट इन ग्राम क्या है हमारे पास यहाँ पे, परसेंटेज 57.8, और इसका जो मोलर मास कितना 14। इसी तरह इसका भी सभी का हमने क्या निकाल लिया यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके बाद हमने निकाल लिया मोल रेशो, नंबर ऑफ मोल्स के बाद क्या निकाल लिया, मोल रेशो। मोल रेशो क्या होती है, जो सबसे कम है इन तीनों में, ये 2.41 सबसे कम है, उसको सभी से डिवाइड कर देंगे 1 by 1। 4.82 है, इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, इसी 2.41 से। 3.6 को भी 2.41 से, 2.41 को भी 2.41 से, जो सबसे इनमें तीनों में कम होगा, उससे सभी को 1 by 1 हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास आ गया, यहाँ 2 आ गया, 1.49 आ गया, लेकिन हमें ये जो आंसर आया है यहाँ पे, ये जो आफ्टर डिवाइड करने के बाद जो आया है, तो ये होल नंबर में चाहिए होता, लेकिन ये क्या है 1.49, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 है। तो इसको होल नंबर बनाना है अगर हमने, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 432 आ गया। और 4 क्या आया हमारे पास, कार्बन, C कितना आया 4, हाइड्रोजन कितना आया 3, और ऑक्सीजन कितना आया 2। तो वो ये जो फॉर्मूला आया C4H3O2, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूले का पहले मास निकालना पड़ेगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू, अगर इसको हम कैलकुलेट करें, कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और इसी तरह से हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सभी को प्लस करके 83 आएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें दे रखा है इन्होंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो कितना है 166 है। तो इन दोनों से हमें, अगर हमने मॉलिक्यूलर जो हमारे पास मास दे रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लिया है, इनकी रेशो जो है 166 डिवाइडेड बाय 83, वो 2 आ जाएगी। 2 को हम n बोलते हैं, ये n बड़ा इंपॉर्टेंट है, n कैलकुलेट करना पड़ता है। तो n अगर कैलकुलेट हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने पीछे निकाला है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।